students, so we have completed the problems on calculating or constructing the index numbers. 20 problems we have solved on calculating the price index number, quantity index number and value index. So we have applied all the formulas to calculate the index number. Now we are going to start a new topic called test of consistency. That means the different formulas are there. Now we need a particular formula which suits our situation. Every formula will have their own advantages and limitations. There is no perfect formula. Every formula is based on some assumptions. So this test of consistencies are devised in order to check whether the formula is consistent for our situation or not. So there are 4 tests of consistency: unit test, time reversal test, factor reversal test and circular test. But out of these 4 tests, the 2 more important tests are time reversal test and factor reversal test. Remember, these 2 tests are satisfied by Fisher's ideal index, whereas Laspierre's and Pasteur's model will not satisfy these 2 tests, time reversal test and factor reversal test. What is time reversal test? If you multiply PO1 into P10, you must get 1. That means, see here, time reversal test says PO1, price index of current year compared to base year. Price index of current year compared to base year. This is multiplied with price index of base year compared to current year. This is PO1 and this is P10. If you multiply both this, you must get 1. So this will happen only in case of Fisher index. In Laspierre and Pasteur's, this will not happen. This test will not be satisfied by Laspierre and Pasteur's. And what is factor reversal test? Factor reversal test says if you multiply PO1 into QO1, PO1 is the price index, QO1 is the quantity index. So if you multiply price index into quantity index, you should get value index. You should get VON. So PO1 into QO1 is equal to VO1. This is factor reversal test. Now, first problem. See the first problem on test of consistency. Now, I am reading out the first problem. Compute Laspierre index and Pasteur's index. Hope everybody have got the problem set from the link under my description. So before watching the video, you must keep it ready, all the problems. Then only you can be able to understand. So all the problems which I am reading now, it is there in the link. So get a hard copy of those problems and keep it ready. Compute Laspierre's index and Pasteur's index from the data given below and test whether they satisfy time reversal test and factor reversal test. So we have to calculate Laspierre index and Pasteur's index. Then we have to test whether these 2 will satisfy time reversal test and factor reversal test. Commodities are given ABC, PO, QO. PO stands for price of base year. QO, quantity of base year. P1, Q1, price of current year, quantity of current year. This is what given in the problem. PO 586, QO 1063, P1 475, Q1 1274. That's it. So first of all, we calculate the index numbers. See here. Calculation of Laspierre's index and Pasteur's index. So commodity A, B, C. PO value, QO, P1, Q1. All these values are given in the problem. So we are going to make 4 columns as usual. Already we have done so many problems. Multiply P in PO into QO, first column. Multiply 5 into 10, 50. 8 into 6, 48. 6 into 3, 18. Then P1, Q1. Multiply P1 into Q1. 4 into 12, 48. 7 into 7, 49. 5 into 4, 20. Then P1, QO. This is P1, this is QO. 4 tens are 40. 7 6 are 42. 3 5s are 15. Last one PO, Q1. PO, Q1. 5 into 12, 60. 8 into 7, 56. 6 into 4, 24. Now take the totals. Summation PO, QO, P1, Q1, P1, QO, PO, Q1. We got the total. First of all, we calculate
लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स। तो लास्ट ईयर PO1L, what is the formula? Already in the previous video we have done so many problems on last year. Summation P1 by PO, first of all you should write price index of current year. So summation P1 by PO, this will be multiplied with QO, base year quantity. That means the last year has taken the weight as base year quantity. Weight जो लिया उन्हें base year की quantity लिया, तो base year की quantity क्या है? QO है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को QO से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? P1 QO, PO QO। तो P1 QO, here you are having 97 and PO QO, here you are having 116. तो 97 by 116 into 100, 83.62. This is what? Price index according to last year method. तो एक प्राइस इंडेक्स आ गया, PO1 आ गया। PO1 का मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर। अब मालूम करेंगे P1O, उल्टा कर दे रहे, या O1 था या 1O कर रहे, तो अब क्या करेंगे? जहां पर 1 रहेगा वहां पर O कर देंगे, जहां पर O रहेगा वहां पर 1 कर देंगे। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम रखेंगे। ये 1 की जगह पे 0 कर देंगे, ये 0 की जगह पे 1 कर देंगे। P और Q सेम रहेगा, P and Q will remain same. The only change is 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो P1 की जगह पे P0, Q0 की जगह पे Q1, या P0 Q0 है तो P1 Q1। That's all. In this way we convert the PO1 into P1O. Right? This is called the price index of current year compared to base year. This is called price index of base year compared to current year. Compared to current year. Now POQ1, what is POQ1? 140, 140 P1 Q1 117, so 140 by 117 into 100, 119.66. What is this? P1O. Now QO1, quantity index of current year compared to base year. QO1, quantity index of current year compared to base year. अब ये फॉर्मूले को ये फॉर्मूले से डिराइव करेंगे PO1। ये PO1 का फॉर्मूला था, ये QO1 का फॉर्मूला है। तो यहां भी O1 है, यहां भी O1 है, तो 0 और 1 को चेंज नहीं करेंगे। फर्क क्या करेंगे? P से Q बन गया, तो wherever there is P you make it Q, wherever there is Q make it P। P को Q लिखेंगे, Q को P लिखेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला है, PO1 का फॉर्मूला है P1QO। तो अब क्या करेंगे? उसको ये P की जगह पे Q ले लेंगे और ये Q की जगह पे P ले लेंगे, तो Q1P0, Q1P0। Easily we are transforming. You simply see the logic. Don't by heart the formulas. If you try to mug up the formulas, it will be very difficult for you, confusing for you. Apply the logic what I am saying. ये PO1 है, ये QO1 है, तो खाली आपको क्या करना है? P को Q में लिखना है और Q को P लिखना है। 0 1 जो है जैसा है पहले वैसे रखेंगे। We are not going to change. ये 1 और 0, ये 1 और 0 सेम। ये P को Q बना दिए और ये Q को P बना दिए, तो Q1 PO। डिनोमिनेटर में PO QO है, तो यहां पर क्या करेंगे? QO PO into 100। तो अब समेशन Q1 PO, और we can write PO Q1 यानी 2 into 3 और 3 into 2 एक ही होता है, 2 3s are 6 और 3 2s are 6। उसी तरह PO Q1 लिखो या Q1 PO लिखो, एक ही मतलब है। तो PO Q1 कितना है? यहां पर PO Q1 140। अब PO QO कितना है? 116, तो 140 by 116 into 100, 120.69। What is this? QO1, quantity index of current year compared to base year. Now VON, value index of current year. Value index is the combination of price index and quantity index. प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू इंडेक्स आता। उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन PO QO इनटू 100, यानी वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो P1 Q1 ये न्यूमरेटर में ले गया,
POQO ये डिनोमिनेटर में लेंगे, P1Q1 डिवाइड बाय POQO इंटू 100। P1Q1 कितना है 117 by 116 इंटू 100, 100.86। तो what we have calculated last year's price index, तो we have calculated PO1, P10, QO1 and VO1. All these things are required for testing the time reversal test and factor reversal test. टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को टेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें मालूम करना है। Now Pasches index. The first of all PO1. Already we have applied Pasches index in the previous problem. PO1 is equal to summation P1 by summation PO as it is. Multiply करेंगे current year quantity. यहां पर last year base year quantity लिया था। Last year के टाइम पे QO लिए थे। अब ये QO की जगह पर Q1 लेंगे। तो समेशन P1 by PO इंटू Q1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Q1 से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर क्या हो गया P1Q1, हाउ मच इज P1Q1 117 एंड POQ1 हाउ मच 140, तो 117 by 140 into 100 83.57। ये क्या चीज आ गया ये PO1 by Pasches method। By Pasches method. This is the last year's method. Right? Now, P10, ये PO1 मालूम करें, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर। अब प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर कंपेयर टू करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर कंपेयर, तो 0 1 को जगह 1 0, तो हम क्या करेंगे, जहां पर 0 था वहां पर 1 कर देंगे, जहां पर 1 था वहां पर 0 कर देंगे। 1 को 0, 0 को 1 चेंज करेंगे, PQ को सेम रखेंगे, PQ को सेम। अब यहां पर PQ सेम है, ये 1 है ये 1 है, तो 0 0 बना देंगे उसको। 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, ये 0 की जगह पर 1 कर देंगे और 1 की जगह पर 0 कर देंगे। इन दिस वे वी कन्वर्ट PO1 into P10 into 100। So POQO, how much is POQO? 116। P1QO is 97, तो 116 by 97 into 100 119.59। This is P10, price index of base year compared to current year। Now QO1, quantity index of current year compared to base year। So again we will transform, the PO1 will be transformed to QO1। PO1 को QO1 में कन्वर्ट करना है, तो 0 1 सेम है, सिर्फ P की जगह पे Q, Q की जगह पर P। ये फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो P1 Q1, तो P की जगह पर Q1 और Q1 की जगह पे P1। 1 तो सेम रहेगा, 0 सेम रहेगा, खाली P को Q बना देना, Q को P बना। डिनोमिनेटर में PO तो QO कर दिया, Q1 तो P1 बना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया P1Q1, हाउ मच इज P1Q1 117 एंड P1QO is 97, तो 117 by 97 into 100 120.62। ये क्वांटिटी इंडेक्स है। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला अभी बताया मैं, समेशन P1Q1 डिवाइड बाय समेशन POQO। ये वैल्यू करंट ईयर का है और ये वैल्यू बेस ईयर का है। तो वैल्यू इंडेक्स मालूम करने के लिए करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू इनटू 100, P1Q1 डिवाइड बाय POQO इनटू 100। तो 117 by 116 into 100 100.86। So we have calculated last year's formulas as well as past year's formulas for price index, quantity index, value index. This is the price index of current year compared to base year, and this is the price index of base year compared to current year, right? Now time reversal test. Now we'll check whether the time reversal test is satisfied by last year and past year's formula or not. तो पहले टाइम रिवर्सल टेस्ट होता क्या है, इक्वेशन है PO1 into P10 must be equal to 1। PO1 और P10 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आना, अगर आ गया तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट सैटिस्फाई हो गया, अगर नहीं आ रहा 1 तो इसका मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सैटिस्फाइड। और लास्ट ईयर इंडेक्स अब देखेंगे, चेक करेंगे। लास्ट ईयर इंडेक्स PO1 विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय 100, you should not multiply by 100, take only the factor P1QO divided by POQO। What is the PO1 value of last year? 97 by 116, 97 by 116 into P10,
How much is P10? 140 by 117. 140 by 117. अगर डिवाइड करेंगे 97 डिवाइड बाय 116 into 140 by 117, you are getting 1.000589. Actually हमको exactly 1 होना. We must get exactly 1. We are not getting exactly 1. So it is not equal to 1. Similarly, Pasch's formula. PO1. PO1 के लिए 117, you should not multiply by 100. You should not take this. ये 83.57% है after multiplying by 100. But we should not multiply by 100. Without multiply by 100, we need the factor. So 117 by 140. 117 by 140 into PO1 116 by 97. 116 by 97. अब डिवाइड कर दो 117 by 140 into 116 by 97, you get 0.99941, not equal to 1. Therefore, Laspier's and Pasch's formula do not satisfy time reversal test. ये दोनों exactly 1 नहीं है. तो इसका मतलब Laspier का फॉर्मूला और Pasch's का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को satisfy नहीं कर रहा. ये एक मेथड है और एक मेथड भी बताता हूं मैं चेक करने के लिए. I'll show you another method. Now, factor reversal test. The factor reversal test says PO1 into QO1 is equal to VO1, and a price index into quantity index is equal to value index. ये होना मस्ट है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. Laspier's formula PO1 is 97 by 116. यहां पर देख सकते हैं आप PO1 97 by 116. QO1 is here 140 by 116. 140 by 116 is equal to VO1. VO1 is here 117 by 116. 117 by 116. So if you multiply, if you divide 97 by 116 into 140 by 116, you are getting 1.009215 is equal to 117 by 116, you are getting 1.00862. Are both equal? No, not equal. Both are not equal. Then Pasch's formula PO1, how much is PO1 here? 117 by 140 into QO1. QO1 is 117 by 97. 117 by 97 is equal to VO1. VO1 is 117 by 116. अब डिवाइड करिए 117 by 140 into 117 by 97, you are getting this value. Whereas 117 by 116, you are getting this value. Both are not equal. Both are not exactly equal. So Laspier and Pasch's formula do not satisfy the factor reversal test. तो ये दोनों Pasch's और Laspier formula, they will not satisfy the time reversal test and factor reversal test. और एक मेथड ये है time reversal test. What is the time reversal test? PO1 into P10 is equal to 1. ये equation time reversal test. Without taking the figures, we use the formula and see. PO1. What is the formula for PO1 here? You can see here. PO1 का formula summation P1 Q1 divided by summation PO Q1. Laspier. First of all, Laspier will see. Laspier का formula PO1 summation P1 QO divided by summation PO QO. Summation P1 QO divided by summation PO QO into P10. P10 का formula क्या है देखिए? PO Q1 P1 Q1. PO Q1 P1 Q1. अब देखिए इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि कैंसिल हो रहा है. देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर दे कैंसिलिंग इन दिस इक्वेशन? नो, नॉट एट ऑल. या न्यूमरेटर में P1 QO है, क्या डिनोमिनेटर में P1 QO है क्या? नहीं है. उसी तरह PO Q1, क्या डिनोमिनेटर में PO Q1 है? नहीं है. कैंसिल नहीं होता. कैंसिल तब होता जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम रहा. तो यहाँ सेम नहीं है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो कैंसिल होके 1 नहीं बन रहा. अगर कैंसिल होता तो 1 बनता, जो फिशर में होगा. अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम फिशर करेंगे तो इन दैट फिशर every numerator denominator will get cancelled, but here it is not cancelling, so it is not equal to 1. Similarly, Pasch's also PO1. What is the formula for PO1? Summation P1 Q1 divided by summation PO Q1. P1 Q1 divided by PO Q1 into P1 QO1. Q1 P1 Q1 divided by P1 Q. Here PO divided by this one PO divided by P1 Q. PO divided by P1 Q. अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं कैंसिल हो रहा? नो.
That means it will not be equal to 1. So ultimately we have proved that Laspierre method and Pasch's method will not satisfy time reversal test and factor reversal test. This is the first problem.